Yes, we have done up to the types of mutual funds. I hope you remember this chart. I already told you investment objective has six different types. Two types are not written here in the chart. You have to write six parts: growth funds, income funds, also known as debt funds. Balanced funds means growth and equity mix. Growth means equity. Huh? Growth and debt mix will be known as balanced. Money market funds. We have another part which is hybrid, and the last part was gilt funds. Okay, when we invest only in government securities, no, that is known as gilt funds. Okay, in growth funds, you have four different sections, four different schemes. First, industrial specific scheme, index scheme, sectoral scheme, and the last one is tax saving scheme. See, we have done open-ended, close-ended based on the structure. Okay. Based on the investment objective, we have equity and growth, equity or growth. We have four parts of equity or growth: sector, index, tax saving, industry. After growth, we have fixed income, or you can tell, you can say debt mutual funds, or you can say income funds. Next, we have balanced funds. Next, we have money market funds. Next, hybrid, also known as monthly income plan, where equity proportion is lesser than the proportion of debt. And last is gilt funds. So I hope we are done up to this slide and you don't have any doubts. So if so far you have, please clear it with me. हाँ जी, डाउट है यहाँ तक कुछ? No, sure, okay. Okay. So I think we can go to the next one. That is liquid and money market funds. अब जो ऊपर ये दिया था ना मनी मार्केट फंड्स, ये क्या होते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में इन्होंने समझाए हैं। दो पॉइंट्स और ऐड की हुई हैं, तो मैंने सोचा अच्छी पॉइंट्स हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को जो हल्का फुल्का डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मनी मार्केट को लिक्विड फंड्स भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि मनी मार्केट मीन शॉर्ट टर्म। So within 6 months, 8 months, 1 year, maybe less than 1 year, you can withdraw the amount. I mean, you can sell off, redeem off your investments, and you can convert it into cash. So this is what is written in the first point. The debt funds invest only in the instruments with maturity less than a year. But in money market instrument, when you are investing in money market and you are choosing debt funds, it will be less than for 1 year. The investment portfolio is very liquid. Liquid means at any moment, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ पीरियड में ही 6 months, 8 months, 1 year में ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. Therefore, it is said that investment portfolio is very liquid and enable the investors to hold their investments for very short horizons of a day or more. एक दिन के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, गिल्ड फंड्स कितना क्या होते हैं? हमने पहले ही सीखा, जिसमें थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट करते हैं। जिन लोगों का रिस्क कैपिटाइट बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं, हाई लो की बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो ऐसे लोग गिल्ड फंड्स में जाते हैं. It invests only in the securities that are issued by government and therefore do not carry any credit risk. Income, yes, risk averse. Halima has written correctly. Very good job. Risk averse जो लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं, जो बहुत कम रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, वो लोग गिल्ड फंड्स को चूज करते हैं. उसमें रिस्क बहुत कम होता है, तो रिटर्न्स भी कम ही होते हैं. मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, अच्छा खासा नहीं मिलता. आप इसमें लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. Ideal for the institutional investors who have to invest in government securities. Example, banks,
Institutional investor. Institution means organization, not an individual. I'm talking about big institutions like banking. Banks have compulsory to invest in government securities. Do you know this? Certain portion of their funds will have to be invested by the banks in their government securities. Example, they will have to purchase treasury bill. There is no option. They will have to purchase treasury bills belonging to the government securities. Certain portion of their income has to be invested there. Okay. Next, enables retail participation. Enables retail participation means you can further invest your funds. No, you can buy and sell and then further repurchase and then further sell it to somebody else. So you can do a retailing job also, like a stock broker. Okay. Yes, for banks it is compulsory to invest in treasury bills, in government securities, government bonds, etc. Certain portion is compulsory for them to invest. Otherwise, how government will be getting money? Okay. और बैंक्स का पैसा भी तो सेफ रहता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, लोगों का पैसा, रादर बैंक का नहीं होता, वो लोगों का होता है ना। बहुत रीजन देखो, बहुत सारे हैं, वो मैं रीजन में नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको गिल्ड फंड्स होते क्या। ठीक है। ईएलएसएस हमने ऊपर याद है पढ़ा था, यहाँ पे ईएलएसएस, देखो टैक्स सेविंग फंड्स, इसमें हमने पढ़ा था ईएलएसएस। ये क्या होते हैं, देखो क्या होता है ये ईएलएसएस, जिसका पीरियड लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स। पहले तो इसका नाम होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, नाम से पता चल रहा है सेविंग स्कीम है ये, आप इसमें से अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। इक्विटी लिंक्ड है, मतलब आपने इसमें क्या परचेज की है, लॉन्ग टर्म इक्विटी। इक्विटी का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए कितना लॉक इन पीरियड है, मिनिमम 3 इयर्स। 3 इयर्स से ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन कम नहीं चलेगा, मिनिमम 3 इयर्स लॉक इन पीरियड है। yes 3 to 5 maybe more than that. हाँ, minimum amount of investment is 90% in equity markets at all the times. मतलब आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 90% in equity market. So ELSS investment automatically leads to investment in equity shares of course. जब आप ELSS की स्कीम खरीदते हैं ना, ऑटोमेटिकली आप किसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं। आई बात समझ में? Richa has a doubt. Let me read the question. 3 year, सिर्फ for 3 years हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या मैम? हाँ, for 3 years means your money will be blocked for altogether for 3 years. 3 years is lock-in period. That means you will not be able to redeem the scheme. If you want to sell off the scheme before 3 years, you will not be able to. You will have to wait for at least 3 years, minimum 3 years, to redeem the scheme, to sell off the shares in the market. Do you get my point? That is known as 3 years lock-in period. 3 years lock-in period, yes. Minimum. Maximum it can go farther than 3 years. Okay. Did you get Richa? बेटा समझ गया? ठीक है, चलो। अब क्योंकि हमको पता है ईएलएसएस क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर ईएलएसएस की स्कीम खरीद रहे थे। अच्छा, ये दोनों होते हैं, ये ओपन एंडेड का ऑप्शन भी देता है आपको, क्लोज एंडेड का ऑप्शन भी देते हैं। यू कैन चूज बिटवीन द टू। नाउ बिकॉज इट इज ELSS, it has been given under section 80C. अब ये ना लिमिट चेंज हो गई है, ये पुराना पिक्चर है मेरे पास, ये मैं चेंज नहीं कर सकती यहाँ पे, बिकॉज ये पिक्चर मैंने लगाया है, आप देख रहे हो, मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकती, कुछ भी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का। ये देखो कुछ भी ऑप्शन नहीं है, फॉर्मेट में भी जाऊंगी तो भी चेंज नहीं कर पाऊंगी। ये देखो, I can write nothing here because it is a picture that I have copy pasted. तो आपको याद रहना चाहिए, कहीं पे नोट कर लो, एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C अप टू 1,50,000 अलाउड। आपको याद है डायरेक्ट टैक्स में किया था हमने, 80C की लिमिट क्या थी, टोटल 1,50,000 ऐसे लिखते थे ना हम, एक्चुअल और मैक्सिमम 1,50,000 whichever is less. So he is speaking about that same point.
under section 80C, the maximum deduction you are eligible to take up, that is 1,50,000 rupees. Okay, is it clear? Dividends are tax free, of course. Dividend from Indian companies are exempted under section 10 subsection 34. I hope you remember the taxation part. Yes, exempted incomes we have already done in semester 3. So इंडियन कंपनी है ना ये ईएलएसएस स्कीम जो है वो इंडिया की स्कीम है. सो एनी कंपनी which gives you ELSS and if they are providing you the income in the name of dividends will be tax free, will be exempted, completely exempted. Benefits of long term capital gain taxation. बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका अच्छा खासा अमाउंट भी निकलेगा. बेनिफिट्स हैं आपको, जब आप बेचने जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे. क्यों? आपके पास टैक्सेशन के भी तो बेनिफिट्स है ना इसमें. आपको टैक्सेशन में भी रिड्यूस होके पड़ रहा है. टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ना, क्योंकि हमको 80C का 1.5 लाख का लिमिट दिया हुआ है डिडक्शन का. सो सपोज यू अर्न 5 lakhs फ्रॉम ELSS स्कीम. सपोज यू अर्न 5 lakhs, उसमें से 1,50,000 तो ऑलरेडी 80C के अंडर में डिडक्शन मिलेगा ना. ओके, इज इट क्लियर? मतलब ये तो मैंने इंडिविजुअल एग्जांपल दिया, पर हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, उसमें से 80C को डिडक्शन में लेते हैं. ठीक है ना? ऐसे इंडिविजुअल इनकम में से 80C का डिडक्शन नहीं लेते. GTI ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C का डिडक्शन लेते हैं. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा. हाउ फंड्स आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ योर रिस्क पोर्टफोलियो. अब अगर मैं सिर्फ इक्विटी डेट इक्विटी फंड्स की बात करूं, सिर्फ इक्विटी फंड्स, उनका लेवल ऑफ रिटर्न्स हाई होता है. क्यों? बिकॉज उनका लेवल ऑफ रिस्क भी ज्यादा होता है. इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क ज्यादा तो रिटर्न्स भी ज्यादा. डेट, देखो डेट में ना रिस्क नहीं होता है, कम होता है, कम. ऐसे नहीं बोल सकते नहीं होता है, बट कम होता है. क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्टेडी इनकम मिलती है ना हर महीने उतना. देखो कंपनी का नुकसान भी होगा ना तो भी आपको डिबेंचर्स को तो इंटरेस्ट देगी ना, बॉन्ड्स को, बैंक लोन वालों को इंटरेस्ट तो पे करना ही है. ये होते हैं डेट फंड्स. तो अगर आपने डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया तो कंपैरेटिवली इट हैज अ लेस amount of risk than equity funds, and therefore the returns are also minimum. I mean, sorry, not minimum, but then little less than what equity funds get. Little less. Okay. Okay. Liquidity and money market funds. These are short term. Therefore, provide low level of returns. This provides stable level of returns. The risk is very, very minimum. Very, very minimum. In the money market funds, the risk is very minimum, and therefore the returns are very low, and it provides you the stable income which does not fluctuate so rapidly. Okay, investors have to face the risk return trade-off. I hope you understand what is risk return trade-off. If you take high risk, the chances of getting returns will also be more. Okay, and if you face little less amount of risk, the returns will also be less. That is known as risk return trade-off, because between the risk and the returns there is a direct relationship. If risk goes up, the chances of returns also goes up. I mean, the chances of returns going up is also more. This is what I wanted to explain. So it has a direct relation, not ulta. Inverse relation is not there. उल्टा रिलेशन नहीं है. ओके. ओके ना. एंड वाइज वर्सा. यस, वेरी गुड. नाउ advantages. So up to this slide, let me know if you have any doubts. Do you have any? Yes, no, please tell me. Guys, you can write in the chat box. No? Okay, fine.
So let's move to the next point, which is advantages of the mutual funds. Now, I hope it is visible. Should I enlarge the screen? No, I will not be able to. I mean, this is the last point. I can zoom out. I mean, zoom in. आपको दिख रहा है? Clearly points दिख रही हैं? नहीं दिख रही है? थोड़ा zoom करो ना आप ही अपने मोबाइल में. शिवानी आप zoom कर दो थोड़ा, क्योंकि बाकी सबको दिख रहा है. थोड़ा थोड़ा ठीक है, समझ जाएंगे मैम, आप बोलो ये समझ जाएंगे। Okay, fine. First, transparent. See, if you invest in mutual funds, you will have to check the NAV of the provided that the NAV of the fund is good. You will be able to see that. If the NAV, if it is reflective, NAV is reflective to everybody. Everybody can check the NAV of the company, of the securities that you invest in. All the details are disclosed. All, everything is disclosed. No information is kept hidden from the shareholders, from the investors of the mutual funds. So it is known as transparent. The system is the transparent system. Affordable. It is affordable. Those who cannot invest a huge amount together, like 5 lakhs, 2 lakhs rupees, they can start with SIPs, systematic investment planning. It is very minimum amount that they are asking you to invest, and they give you the facility of paying or investing the fund, I mean through installments. Like 1 month you can choose monthly installments, you can choose bi-monthly installments, you can choose 6 monthly installments, right? So that is affordable. Small earners can also invest. Very good, Shivani. Small earners can also invest. Professional management. What do you mean by professional management? You get the expert idea from somebody who is expert in that particular field, because you don't know where to invest, which company to invest in, what to purchase, when to sell. So there is a professional management that you, expert idea, expert advice, expert guidance you get from those who are professional. Okay, those who have complete knowledge about that. Yes, that is known as fund manager. Very good, Alima. That is known as fund manager. That fellow is known as, that expert can be called as portfolio manager, fund manager, etc. Diversification. Always remember, mutual funds is the biggest advantages of diversification. Because of diversification, you choose mutual funds. No, you have 2 lakhs rupees. Now 2 lakhs will not be divided in particular, or invested in a particular security. It will be divided into different securities of different companies, and that will become your portfolio. So risk is also diverted. Yes, we can diverse into the different securities with different companies. Very good. And because of that, we are getting an advantage of reduction of risk. Reduction of risk. Yes. Do you understand that? How your risk will be reduced? Because one profit of one, I mean loss of one security will be compensated by the profit of another security. Okay, because we have a pool of funds. Very good. Yes, very good. Convenience. It is very convenient. It is easy to purchase, easy to sell, and it has very minimum cost to be incurred while purchasing and selling. So it has a cost efficient benefit also. The cost is also very minimum. You don't have to incur so many other different expenses for investing, for purchasing, for buying, selling, etc. Yes, even if you have no idea about securities, professionals are there to guide. This is also an advantage. So it can be written as an explanation to professional management. Very good. Liquidity. What is liquidity? What is liquidity? It can be easily converted into cash, hard cash. So it has a advantage of converting into cash also. Whenever you want to redeem, you can, and uh, convert it into cash, except close-ended funds. Huh?
Closed-ended funds cannot be redeemed before the maturity date. Yes. Yes, okay. Advantages, few more advantages in point wise. Portfolio diversification, we have already done in the previous slide. Professional management, also done. Reduction in risk. This is what I said. You can also add one more point in the previous slide, that is reduction in risk. Because we have a facility of diversifying the funds into different securities, therefore the risk can be reduced, no? So that can be written as a next point. Reduction in risk. Okay, reduction in transaction cost, that is already done. Liquidity, already done. Convenience and flexibility, already done. Okay, what is new is safety. Mutual funds are safe to invest in. Nobody can cheat me because it is well regulated by an authority which is known as SEBI, Security Exchange Board of India. So how many points in all? In this, 2 points are given as extra. Reduction in risk and safety. And here how many points? Sorry. Here how many points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. 8 टैक्स बेनिफिट्स भी है ना, आपको टैक्स एफिशिएंसी भी तो मिलती है. 8 here Yes. and 2 more there in the next slide. Reduction in risk and safety. So 10 points of advantages, a good number of points. ठीक है. Tax benefits, you get tax benefits also. ATC, that was we were discussing in the earlier slides. See, ELSS, if you invest in this scheme, you have an option of 80 section 80C, up to 1,50,000 rupees. Please note it somewhere. This is 1 lakh purana wala amount. You have to write new wala, that is 1,50,000. So this is tax benefit that you get. Tax liability will be also reduced. Yes. Okay. Now this is just an explanation of all the points that we have covered. Okay. Now, do you want to read it now, or you can do it little later after my lecture? See, all the points are there. All the points with their explanation. So do you want me to repeat all the explanations again? Because when explaining the point, I was giving you explanation only. So it is for you to understand and read out the points with the explanation. Okay. All the points are there. All. Okay. Now disadvantages, or you can call it as limitations. What all limitations you have? Mutual funds are subject to market risk. Yes, because market fluctuates, then mutual funds will fluctuate. The returns of the mutual funds is not stable. The returns are not stable here. It will fluctuate as per the market risk. Okay, it has a market risk associated with. Now, when markets will go up, if you sell your shares, you will earn the profit. If market is going down, even if you want to sell your shares, you can, but then the returns will be not as much as in the case of market going up. Okay, I mean, you will incur losses as well. You may incur losses if you want to sell it when the market is down. Therefore, this is also known as disadvantage. No guarantee of returns. See, if now market is not increasing, it is not going up. Okay, so maybe you don't earn anything. No guarantee. Guarantee is not given to you. Okay, there is no such guarantee which is, yes, because it is based on market. It is based on fluctuation rates of the market. Because those rates always fluctuates. Therefore, there is no guarantee that I'm giving you that yes, you will be earning something. I can't give guarantee. You will be able to earn. Okay, but there is no such guarantee. Diversification of portfolio doesn't maximize returns. See, we have a benefit of diversification, right? Funds are diversified into different portfolios. But that does not mean your returns will be maximized. That means risk can be reduced. But returns can be maximized? No, we cannot say that. Maximizing returns is another aspect that does not depend on diversification.
But yes, you can say reducing the risk level depends on the diversification. Yes. So every time you reduce the risk, returns will be maximized. No, it is not necessary. Okay. Selecting right financial securities is not an easy task. We have to select right financial security, no? Either equity, debt, money market. Okay, you have to select the right one, and it's a very difficult job. To choose the right option is a very difficult job. Cost management not proportional to performance. Now, different portfolios may have a different cost. So there is no management as such that every product, every security, financial security will have a same cost. No, there is not management, proper management of cost, the ratio of cost towards their performance. Okay. अनएथिकल प्रैक्टिसेस में क्रीप इन, मतलब मार्केट में अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हो सकती है, आपका पैसा लूट के एंड देन कहीं गलत जगह पे भी लगाया जा सकता है. ओके, चीट हो सकता है, बट वो ना हो इसीलिए सेबी बनाया गया, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए. सेबी बनाया नहीं गया, सॉरी, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस म्यूचुअल फंड्स के लिए बनाए गए. और सेबी इज द ऑथराइज्ड, क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन which keeps an eye on the workings of the mutual funds. ओके, बट स्टिल देखो, अभी पुलिस भी तो है, फिर भी तो चोरी होती है ना. तो ऐसा तो नहीं है कि गलत काम नहीं होते, लॉ बना हुआ है, कोर्ट्स बने हुए हैं, हम लोग कोर्ट केस कर सकते हैं, तो भी तो गलत काम होते हैं. तो देखो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो भी होती है. बेशक आपको सेबी है देखने के लिए, काम को देखने के लिए सेबी नजर रखता है, बट स्टिल आप किसी ना किसी वे से निकल कर मतलब चीट कर सकते हो, तो इसमें चीटिंग भी हो सकती है. ओके, सो वही पॉइंट्स उन्होंने लिखी है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी है इसमें. अगर आप देखो तो डिसएडवांटेजेस में ये है आपकी 6 पॉइंट्स. इसके अलावा देखो, नो कंट्रोल ओवर द कॉस्ट. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी की गई है कि आपको देखो कॉस्ट है कम, लेकिन अलग अलग लेवल पे अलग अलग कॉस्ट जो होती है ना, वो हम डिक्लाइन नहीं कर सकते, वो तो भरनी पड़ेगी. ठीक है. नो टेलर मेड पोर्टफोलियोज. अच्छा, आप अपने पोर्टफोलियोज नहीं बना सकते. जो पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, वो ही खरीद सकते हो. अपना टेलर मेड मतलब अपनी मर्जी से, बाय योर ओन विश, यू कैन नॉट सिलेक्ट द, आई मीन सिलेक्टिंग पोर्टफोलियोज ओके, बट यू कैन नॉट मेड द पोर्टफोलियोज. Managing a portfolio of funds is a, I mean, availability of large number of funds can actually mean too much choice for the investors. देखो, अब आपके पास है ना, आप एक शॉप पे जाते हो, एग्जाम्पल, हाँ, आप एक शॉप पे जाते हो, उधर है ना आपके पास वैरायटी ऑफ ड्रेसेस है, वैरायटी ऑफ टी शर्ट्स हैं. अब आप कंफ्यूज भी तो उतनी हो जाएंगे, जितनी ज्यादा वैरायटी उतना ज्यादा कंफ्यूजन. अगर आपको देखनी सिर्फ 2 टाइप की ड्रेसेस है, तो उसमें कंफ्यूजन कम होगी. नहीं, आपको चाहिए ये भी देखना है, प्लाजो भी देखना है, ये भी देखना है, टी शर्ट भी देखनी है, शर्ट भी देखनी है, और पैंट्स भी देखने हैं, तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा. जितने ऑप्शन ज्यादा होती, कंफ्यूजन ज्यादा. सेम विथ म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, बहुत चॉइसेस देता है. So sometimes it becomes difficult to choose the best amongst all the options, alternatives. Sometimes it becomes very difficult. So he may again need advice. He may again need advice how to select the fund to achieve the objective. He himself will not be able to do it alone. He may get confused with what and the best security can be chosen. ठीक है. डिले इन रिडम्पशन, अभी 3 to 6 डेज लग जाते हैं, आपको पता है. ऑन द स्पॉट आपको पैसा नहीं मिलता है. 3 to 6 डेज का प्रोसीजर होता है रिडम्पशन करने के लिए. ओके, मतलब बेचा और ऑन द स्पॉट कैश मिल गई ऐसा नहीं होता है. 3 to 6 डेज लग जाते हैं, मिनिमम 1 वीक तो पक्का ही लगता है. आई मीन मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम 1 वीक पैसा आने में लग जाता है. ठीक है ना. See, few more disadvantages. Need to pay fees or expenses even when fund performs poorly. See, if your fund is performing poorly,
बट स्टिल यू पोर्टफोलियो मैनेजर तो आपसे अपनी फीस लेगा ही ना। पोर्टफोलियो मैनेजर तो बोलेगा ना मैंने तो सही जगह लगाया था, मार्केट डाउन चल रहा है तो हमारी गलती नहीं है। वो तो अपने फीस अपने एक्सपेंसेस तो आपसे निकालेगा। ओके, दिस इज एन डिसएडवांटेज। इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन में प्रिवेंट द चांस ऑफ हिटिंग द जैकपॉट फ्रॉम वन सिक्योरिटी। अब सपोज आपके पास 5 लाख रुपीज थे, उस 5 लाख को आपने डिवाइड कर दिया डिफरेंट 5 सिक्योरिटीज में। उसमें से जो फर्स्ट सिक्योरिटी थी ना, उसका मार्केट इतना ऊपर चला गया कि आपने उसमें से बहुत अच्छा अर्न किया। लेकिन अगर सारे के सारे 5 लाख उसी फर्स्ट सिक्योरिटी में लगाते तो जैकपॉट हो जाता ना, 5 लाख का 15 लाख बन के मिल जाता था हो सकते। बट अभी आपने सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया था 5 लाख की जगह पे, तो 1 लाख में से आपको बस 2-3 लाख बन के मिले। तो जैकपॉट बड़ा हो सकता था बट वो नहीं हुआ। Okay, so hitting the jackpot, we are missing the chance of hitting the jackpot from that particular one security, which plays a very good role. ठीक है? Yes. So luck factor also comes into picture. Less than 1 minute is pending. We can join